So, namaste doston. Hello everyone. Today we have one expert session, okay, on technical expertise in the pharmacovigilance. तो बेसिकली आप सबको पता है कि फार्माकोविजिलेंस इज रियली ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लाइफ साइंसेस, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल साइंस पीपल्स. बट यहाँ पे क्या है ना कि फार्माकोविजिलेंस में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ द यू कैन से बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. उसी के अकॉर्डिंगली आपको एज अ फ्रेशर और एज अ लाइक पीवी फ्रेशर, मतलब अभी आप ज्वाइन हुए, तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू डू, ओके, व्हाट थिंग्स यू नीड टू लर्न. ये सारी चीजें आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो ये सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आज का वीडियो आप ये बोल सकते हैं कि काफी अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्रेशर. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे गेस्ट को पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं. इनका नाम है शरद माली. ओके, हेलो शरद, कैसे आप? हाय अमित, नमस्ते. आई एम फाइन. ओके, थैंक यू. तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. शरद इज इन द टीसीएस सिंस लास्ट मेनी इयर्स, लाइक मोर देन 10+ ईयर एक्सपीरियंस इनको है इन द फार्माकोविजिलेंस फील्ड, और ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन द टीसीएस. ओके, तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि शरद, आप मुझे बताओ कि लाइक हाउ द फार्माकोविजिलेंस फील्ड राइट नाउ इज चेंजिंग एंड व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर. Yes. Thank you, Amit, for giving me opportunity to speak in front of your audience. So, जैसे आपने पूछा, what are the job responsibilities? So, since last 13 years, I am in a clinical field and specifically in pharmacovigilance. In PV, as theoretically, everyone knows that pharmacovigilance is detection, assessment, understanding, and prevention of adverse events. While we speak practically, what are the activities required in order to perform these tasks? So we have to perform these tasks step by step, like we see. So now current trend is like previously the lot of manual work has to done when I joined. In current days, these manual works are replaced by automations. Automation such as softwares, specifically by artificial intelligence. So, जैसे आपने बताया कि artificial intelligence changes many aspects in the pharmacovigilance. So, can you tell in simple words how it changes? क्या changes हुए और आप कैसे अभी work कर रहे हैं? क्या changes हुए from manual to automatic? Okay, so what are the changes? Before that, I will answer at high level what is artificial intelligence. Everyone must know, but again I will reiterate. The artificial intelligence is like this is a field of computer science dedicated to create machine and softwares that can be performed by human intelligence. So in simple words, previously जो human लोग करते थे what are softwares and machine creatings, ये अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है. यहाँ पे अभी ह्यूमन इंटरवेंशन या इंटेलिजेंस का जरूरत नहीं है. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल. एंड हाउ इट वर्क्स. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक तो इनपुट लगता है डेटा. वी हैव टू प्रोवाइड इनपुट डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा द प्रोसेसिंग हैपेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो उसमें क्या होता है, वो पैटर्न रिकग्निशन करता है, एल्गोरिथम्स रीड करता है. बेस्ड ऑन these data patterns and algorithms वो output देता है. This is what automation output we receive. And इसमें कोई human intervention की जरूरत नहीं रहता है. So this is how artificial intelligence. Okay. Now you ask me how the PV में उनका use क्या है. तो basically in previous question as I explained कि PV में होता क्या है. Basically detection, assessment, understanding and prevention of adverse event. अगर इसमें भी और डीप जाए, मतलब पीवी में एक्चुअल देयर आर 14 मॉड्यूल्स. तो राइट फ्रॉम एई कलेक्ट कैसे करना है, एई कलेक्ट तो वायर रिपोर्ट होता है. रिपोर्ट में सिंपल आईसीएसआर लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सम पेशेंट्स अपफ्रंटली रिपोर्ट्स फ्रॉम मीडिया और लिटरेचर. वो एडवर्स इवेंट के रिपोर्ट आते हैं. तो रिपोर्ट आते हैं तो उसमें इनिशियली वो
उनका ट्राइजिंग करना जरूरी रहता है। ट्राइजिंग मतलब उसका बेसिक वैलिडिटी चेक करना रहता है। उसमें टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि केस इंटेक एंड डेटा प्रोसेसिंग। देन उसका नेक्स्ट स्टेप रहता है एडवर्स इवेंट डिटेक्शन और सिग्नल डिटेक्शन। सो व्हाट एवर डेटा वी हैव रिसीव्ड, उसमें जेन्युइन व्हाट आर द एडवर्स इवेंट्स, वो हम लोगों को रिव्यू करना रहता है। उसके बाद उसका केस प्रोसेसिंग एंड ट्राइजिंग, उसका कोडिंग एक कंसेप्ट रहता है। व्हाट आर द एज रिसीव्ड, उसका कोडिंग करना रहता है। उसके बाद there are other sources also such as literature screening. So literature, as you know, literature means जो कोई publications रहते हैं या कोई research individuals अपना खुद का रिसर्च करके एनी पर्टिकुलर ड्रग और रेमेडीज वो पब्लिश करते हैं प्लेटफॉर्म पे। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वो प्लेटफॉर्म्स को हम लोगों को रिव्यू करके उस वो लिटरेचर रिव्यू करके उसमें से भी स्क्रीनिंग करना पड़ता है हम लोगों को कि आर देयर एनी एडवर्स इवेंट इन लिटरेचर। उसके बाद मेडिकल कोडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक पार्ट रहता है। एंड वो सब व्हाट एवर डेटा वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिपोर्ट्स, वो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बॉडी को सबमिट करना रहता है। ओके, so these are the tasks I explained in short what the basic steps happens in PV. Now ये till time और historically ये टास्क हम मैन्युअली करते थे। वॉट एवर पीवी प्रोफेशनल्स मेरे थे वो लोग मैन्युअली करना पड़ता था। बट नाउ द थिंग्स हैज चेंज, नॉट चेंज कंप्लीटली, स्टार्टेड चेंजिंग। तो ये शुरू हो चुका है कि इसमें अभी विदाउट एनी ह्यूमन इनोवेशन और विदाउट एनी पीवी प्रोफेशनल वो ऑटोमेशन इट्स ऑटोमेशन होते जा रहा है। सो राइट फ्रॉम अभी कलेक्शन में भी पीवी कैन एआई इंटेलिजेंस कैन हेल्प, लाइक उसमें in case intake we receive calls and reports from call centers or social media or electronic health records. So PV in artificial intelligence can perform these tasks without any human interventions. ये फर्स्ट चीज हो गई। देन एडवर्स इवेंट डिटेक्शन एंड सिग्नल डिटेक्शन, इसमें भी इसमें होता क्या एक्चुअली कि वी हैव टू रिव्यू द पेशेंट डेटा। उसमें हम लोगों को पैटर्न रिव्यू करना पड़ता है, मतलब उन्हीं एनी पर्टिकुलर ड्रग के लिए कौन सा ए का पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है। सो एआई इज I mean, once AI receive any particular type of input, so he has memory. He can retain the pattern, and next time he receive some similar kind of data, immediately with short period of time, he can provide output, required output. So in short, यहाँ पे एक तो पीवी प्रोफेशनल की जरूरत कम हो गई, देन रिक्वायर्ड टाइम इज आल्सो मिनिमाइजिंग। ऑन रियल टाइम बेसिस ही कैन प्रोवाइड the output, required output. So for these output previously, the longer time was required and with more number of PV professionals. Then for again for literature screening, the AI can keep watch on all the literatures on real time basis. Then medical coding, the AI can code the terms into Medra automatically. Nowadays, the PV professionals are required, but yes, definitely AI is going to help in to code these data in Medra terminologies. And the most important thing, all these generated data need to submit to the health authorities or regulatory bodies of that particular countries. So in this process also, AI can generate the ICSR E2B report format, automate the submission to regulatory authorities. This may be automation is already starting. So in short, in every step in pharmacovigilance, which was previously done by the PV professionals, इसमें AI का एंट्री हो चुकी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस शरद। एंड इसका बेनिफिट क्या है? अभी जैसे इतना एआई का एंटर जैसे हो चुका है फार्माकोविजिलेंस में, इसमें आप कंपनी का क्या बेनिफिट है, बट एट द सेम टाइम फ्रेशर्स के लिए भी या जो भी अभी एम्प्लॉय है फार्माकोविजिलेंस में, उनको क्या एडेप्टेशन? So coming to the benefits, everyone can realize with regards to speed and efficacy. If we perform any task by manually, definitely it's going to take a longer time. But if we go by this automated technology, performs on real time with maximum speed, efficiency, then
accuracy and consistency. AI is consistent and provide data with much accuracy. Then early signal detection. I mean, software can be show the proactiveness about adverse event reporting, and most important, cost effectiveness. Cost effectiveness. Everyone will look in that paradigm also with minimum cost, how I can get maximum task done. So this major uh, benefit, cost effectiveness, scalability. So AI can handle the millions of case reports and real world data source simultaneously, which this task cannot be performed by human beings, because we human being require time to think, realize, and then provide output. But since AI has memory, so if we provide the data patterns and algorithms to the AI, then the AI can handle multiple case studies on real time, and whatever, I mean, a large amount of data can be handled in very short period of time. Then uh, advances can be provided in regards to report generations and different further analytics in PV. And most important, all this data needs to submit to the regulatory authorities, that is health authorities. AI can adjust their required pattern of data. So AI can adjust the reports, the format the format required by health authorities. So all these are benefits of AI utilization. Now your second questions, in for being a fresher, what are the skills required in order to perform this activity? So basically, AI, what changed due to AI? Only processing. The basic concept remains same. So being a PV professional, he must know the deep domain knowledge. The concepts are similar. Whatever defined in PV or your anatomy, physiology, he must know everything. So basic concepts are similar. Along with domain knowledge, he must be aware about our awareness about artificial intelligence, how AI works, what are the inputs required to AI, their pattern of working, handling. These techniques must be acquired by the PV professionals. Knowledge of regulatory guidelines. What are the guidelines? Although this task is done by AI, but being a PV professional, one should know the what are the standard regulatory guidelines for different regulatory bodies. Then how the data handlings and analysis occurs. The basic concept should be acquired. Although these are the already automatically provided by the AI tools, but the basic technique should be aware the PV professionals. So thank you Sharad for sharing this. So like ये तो आपने बताया कि ये चीजें जरूरी है, but how fresher can learn this? Is there any way like they can learn any platform, how they can learn all these things and make industry readiness? Yes, this is a very much questions, because whenever any PV fresher goes for interview, definitely he must know the AI. What is AI? Along with basic knowledge, he must be familiar with AI. So there are different courses available, and available on LinkedIn or Udemy platforms or other different platforms. He can search on internet, Google, or any literatures. Everyone can easily get the AI learnings. For knowledge, I will recommend go for specific pharmacovigilance course, which provides the latest trend in AI technology. And Amit, I believe you must have this course with you. I mean, you are providing this PV course with the latest AI technology. Yes, yes, yes. We are also providing pharmacovigilance course along with the AI. Okay, so yeah, everyone, guys, in the intro description, I provided all the details. We are also providing same thing along with the placement assistance and skill development, skill oriented classes also there, and domain knowledge is also there. Okay, yeah, thank you for this. Yeah, so these are the different platforms you say. But now, as you say that there are
already many trends are changed, right? So how industry will teach you? Is there any training that they are given for the AI? Any hands-on training they are given in the software during the training program? Like, is there anything in the company, in TCS especially, I'm asking? Yes, management is providing AI training as and when required. TCS has your own Udemy platforms, and they are providing us training as and when required. But these are the basic level trainings. If anyone want to expertise in AI, I would recommend to join any PV and PVI related course. So like along with the AI, so is there any need कि किसी भी स्टूडेंट को पाइथन जावा जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस भी सीखने, प्रोग्रामिंग भी सीखना है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट होता है इस सारे एआई फेज में? Specifically for PV, if you are having experience or knowledge with Python and Java, not as such, but yes, always it would be beneficiary. Additional knowledge is always beneficiary. But for PV, it requires, as I mentioned step earlier, right from detection, assessment, understanding and prevention. इसमें जो भी कुछ आता है, मतलब रिपोर्ट लेना, रिपोर्ट ट्राइज करना, देन उसका सिग्नल डिटेक्शन करना, कोडिंग करना, देन समराइज करना, रिपोर्ट बनाना और रेगुलेटरी को भेजना. With regards to these activities, whatever टेक्निक्स रिक्वायर्ड, ये तो पहले आनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट कुछ एडिशनल आता है पीवी पाइथन, तो इट्स वेल एंड गुड. ग्रेट टू नो. ओके. सो जैसे अभी आपने ये सारी चीजें बताई, अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री में, मतलब फार्माकोविजिलेंस में, जैसे आपको भी पता है देयर आर मेनी टाइम्स ले ऑफ भी होते हैं. ओके. एंड ओवर हायरिंग भी होती है. तो मतलब बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ये अनस्टेबल जॉब है, कभी मतलब ये सिक्योरिटी है कि नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म हमें करना है कि नहीं. सो हाउ इज योर थॉट कि आप अभी इतना सारा एक्सपीरियंस के बाद अभी कंपनी में है, so how's your thought, how it is stable job, क्या हम इसको एक long term job देख सकते हैं? Yes, it's a uh, very what I can say, it's very uncertainty kind of things are happening now. But coming to stability of job, one thing in PV there are daily updates. It's a continuously changing fields. The guidelines and requirements are continuously changing. So one thing the PV professional has to make sure that we need to update it with new technologies. Always new updates and adopt with the changing trend. If we stay with our own terminology and the traditional way, yes, this is going to trigger you, and this will make unstable. So we need to leave some manual ways, and we have to adopt the new techniques, new learnings, then definitely this is going to be stable job. But since last couple of years, things have drastically changed. The main PV companies started implementing these automated tools, and it is expected that by 2030, the compounding annual growth rate of AI utilization in PV field would be around 12 to 13%. So, in order to survive in this changing field, we need to keep updated with regards to changing skills. For sharing all this, I would really like to thank you. But again, you are in the TCS, okay, which is one of the dream company for most of the students. Okay, so TCS के बारे में बताएं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी करने के लिए क्या करना पड़ता है, और TCS में जैसे फार्माकोविजिलेंस में कैसा फ्यूचर है. लाइक इवन लाइक TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, जो हेल्थ केयर IT कंपनीज है, राइट. तो इसके लिए यहाँ पे पैकेजेस कैसे होते हैं, यहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है, और यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करना पड़ता है? हाउ इज योर इनसाइट्स? Maybe how to apply. So you can get through these job openings via company platforms. The TCS have a platform, I mean, page on LinkedIn disclosing openings on their pages. You can get information from there.
different colleagues, seniors, TCS में रहते हैं. Through them, everyone can get details about opening. Then individuals can directly apply on company's website in career portal. They can upload their CVs, and time to time when there are walk-ins or job recruitments, they are sharing post on different platforms. This is the way to approach for PV job. Then next question: how the culture in TCS is very good. You all must know that with regards to basic human values, the company stands on these values, and ये work culture बहुत ही अच्छा है. But again, no one will bear us if we become I mean जैसे कि if we are not adopting with new technologies, we not met the expected outcome, expected performance, fail to perform, then it becomes difficult. So main वही है, we need to updating ourselves, and we should be applicable to the task which is assigned to us as a PV professional. इंडस्ट्री में एक चीज होती है, आपका आप दिखने में कैसे हो, आपका लैंग्वेज कैसा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ यू आर एप्लीकेबल टू द परफॉर्म टास्क. आपको जो टॉप टास्क या जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप कैसे तरीके से करते हो, एंड एट हाउ मच एक्सटेंट आप करते हो, इसके ऊपर आपकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड होती है. If you are performing your task more than 100%, then you are good for company will appreciate you. But if we are fail to or meet this expectation, then things become a little bit challenging. Yeah. So thank you, Sharad, for these valuable insights. Okay. कुछ लास्ट मिनट टिप्स आप देना चाहोगे जो फ्रेशर के लिए, जो फार्माकोविजिलेंस में लॉन्ग टर्म करियर करने के लिए देख रहे, और जो एआई जो आ रहा है टेक्निकल स्किल से, थोड़ा सा ये है कि ये फील्ड हमें जॉब लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में कोई मतलब इम्पैक्ट करेगी नहीं करेगी, ये कंफ्यूजन है बहुत बार. ठीक है, इसमें लोगों की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, एआई ज्यादा आने के बाद मशीन्स बहुत सारे काम करेंगे, ये भी चीजें है. लाइक दिस इज द मिथ एज वेल. एंड अगेन जैसे आप लास्ट मिनट अगर टिप देना चाहे फ्रेशर के लिए तो थैंक यू. So my first recommendation based on my experience is like define your interests. Freshers, आपको क्या अच्छा लगता है? There are plenty of fields available in pharma sector, right from your quality control, corporate QA or corporate any analysis, then regulatory, then PV. आपको क्या अच्छा लगता है ये डिफाइन करो. अगर if you are able to find what is आपका इंटरेस्ट किस में है, अगर वो फील्ड में आगे गए तो आगे की चीजें थोड़ी इजी होती है. लाइक आपको कभी बोर नहीं होगे, यू विल एंजॉयिंग योर वर्क. अगर शुरुआत में ही थोड़ा द फील्ड यू डू नॉट लाइक उसमें एंटर होगे तो थोड़ी टाइम के लिए आपको बेटर लगेगा, बट टाइम यू विल फील बोर्ड एंड ये रिपीटेटिव वर्क है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है. तो बेटर टू अवॉइड, आपको खुद को क्या अच्छा लगता है वो फील्ड में आप जाओ. राइट, वो पीवी हो, मिलिट्री हो, या कॉर्पोरेट की वे हो, या प्रोडक्शन हो, वॉटेवर. This is the first thing. The next question you ask is about uncertainty. So due to AI, what is going to the jobs in PVO कम हो गए, ज्यादा हो गए. So one thing I will tell you, now current population of world is 750 crores, more than 750 crores world की population है, and it's going continuously going. So इसके लिए drugs तो लगेंगे, and every regulatory authority now becoming their timeline stringent. So whoever marketing authorization holder या any pharma company अगर कोई ड्रग लॉन्च करती है तो उसका पीवी करना ही पड़ेगा. So work is always there. So ये करना ही पड़ेगा. Now, as I said earlier, if we want to enter in PV and be stable there, so हम लोगों को वो टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी.
Now again, what about the AI से job कितने कम होंगे और कितने बढ़ेंगे? So although the AI is nullifying या human task कम कर रही है, but there is new opportunity generating. Uh, uh, solely AI cannot perform any task. Even the AI output देता है उसके ऊपर human review जरूर रखता है. So वो technicians लगेंगे which are adopted with the strong theoretical या basic knowledge, domain knowledge and adopted with new AI technologies. So ये नई टेक्नोलॉजी सीखो, different certifications acquire करो, be visible about new updates in the PV day to day coming. So there are opportunity, but we need to change yourself. We need to adopt yourself with new learnings. So yes, always there is opportunity, although uh, this manual work is replaced by AI. AI is also creating new opportunities, new technology, and which should be enhance this PV career. Okay. Yes. Thank you, Sharad, for this valuable insight. I wish you all the best for your again career ahead. And I would like to thank you all student. Okay, कि आपने again I would like to say that this video will be definitely more beneficial to all. कि career कैसे करना है, जो AI का इम्पैक्ट है फार्माकोविजिलेंस में वो कैसे, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, एवरीथिंग यू गॉट टू नो. ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें. वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, ये डिस्कशन कंप्लीट आपको वैल्यूएबल लगता है, वीडियो को लाइक करें. और अगर कुछ भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट जरूर करें. और अगर आपको लर्निंग करनी है फार्माकोविजिलेंस में कंप्लीट डोमेन नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट असिस्टेंस, एआई लर्निंग, तो आप हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, या फिर दिए गए नंबर्स को या हमारे वेबसाइट को कांटेक्ट करें, वेबसाइट को विजिट करें और कांटेक्ट करें. Thank you for watching this video, and thank you, Sharad, for this video and your time. Okay, thank you. Thank you.